Okay, so let us start, and first let me see who all do I see. I see Caleb, Chinmay Ranade, Ishan. Ishan के बगल में कौन है? अनिरुद्ध पाटिल, अभ्युदय, मोहना, चारुल, कुमावत, है ना? ये लोग क्लास में बैठे हैं. फाइन. और तो कोई नहीं है जो कैमरे से छुपा हुआ है और मुझे नहीं दिख रहा है? चारुल, तुम्हारे बगल में तो कोई नहीं है? Now let's see who all do I see. I only see Sahas Chauhan. तो इक्षा निधिनी को वेटिंग रूम में डाल देते हैं बिकॉज ये लास्ट क्लास है और अभी भी बताना पड़ता है कि वीडियो ऑन करो. चलो ठीक है. So, निधिनी को तो समझ में आ गया. इक्षा नायर वेटिंग फॉर यू. So maybe her video is coming now. Okay, guys. So now. Yes, sir. I'm turning it on in just a minute. Actually, my laptop is lagging a bit. No worries. So please put it on so that I get to see you. And let me remove this pin. So the topic that I have at hand, if I tell you how lucky we can be with this topic, so you should get somewhere around a problem or two from whatever we are going to discuss in next half an hour. Ek problem pakka. If you are lucky enough, you get two problems from what we discussed now. So we are discussing something called as statistical concepts, that too related with surveys. And I plan to cover something called as population, sample, types of surveys and study, sample parameter, margin of error, confidence interval, confidence level. So these are some concepts that I plan to cover right now. On your SAT paper, you will be required to exhibit your understanding. You may not be required to calculate anything, but understanding आपको दिखाना पड़ेगा. Questions can test your understanding with respect to, what is population or sample parameter or margin of error or confidence interval. इनका interpretation कुछ ऐसा आ सकता है where you may be required to answer the questions or give interpretation. तो इसको चालू करते हैं. मैं क्या करता हूँ? I'll try and use my whiteboard as much as possible जो भी दिखनी है. अब देखिए. So guys, I'll make this spotlight. आपको जहां डाउट आए खारगर क्लास में, people who are sitting there, wherever you get doubt, you ask me. Rushali, please make me co-host. हाँ सर. Co-host बनाओ मुझे. अच्छा ओके. Okay. Thank you. Okay. हाँ जी. Okay. Thank you. So you see my whiteboard, guys, right? क्या हो गया अभ्युदय? AC बंद कर. ठीक है. तो AC और ये सब तो तुम करो. Let me start this. So we are talking about surveys here. सबसे पहले the thing that I want to cover is types of there are three types which are covered in our syllabus, which we must know. The first one is field survey. Now, what is a field survey? You must have seen people coming from Eureka Forbes, from some company to your house. They carry a questionnaire. They ask you some questions. You respond and they record. Or they give you a questionnaire and they're standing there, and in their presence, you are doing objective or subjective answering of the questions on the questionnaire. So one of the common tools that is used is a questionnaire when you are participating in field survey. So the respondent and the researcher both are present at that place. Either they are interacting or one is administrating, the other researcher administrating the questionnaire over the respondent
and the responses are collected. ये होता है field survey, जिसमें questionnaire एक बहुत common सा tool है which is used to record statements. The second type is called observation. Now, in observation, what happens, unlike field survey, the respondent is participating in the research either knowingly or unknowingly. The respondent may know कि कोई research और study चल रही है जिसका वो एक part है, या उसको कुछ भी पता नहीं होगा. And researcher is only observing but not participating. So it can so happen, मान लो ये खारगर क्लासरूम में ये इतने बच्चे बैठ के मेरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस जूम रूम में एक रिसर्चर भी आ जाए जो इन बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा हो. दे मे नो, दे मे नॉट नो, एंड ही इज मेकिंग हिज कमेंट्स. You may have seen in a lot of Hollywood, Bollywood, Tollywood movies where, you know, there's a police room and there's a interrogation going on, where the suspect is on the other side sitting around a table, and there's somebody asking question, and on one of the wall, which is apparently a wall or a glass, जिसमें दूसरी तरफ से आप रूम में देख सकते हैं, बट रूम से बाहर कौन खड़ा है वो नहीं दिखता है सस्पेक्ट को. And there are some observers who are looking at the behavior and response. It's a one-way mirror kind of thing. That is also kind of observation. So with customers, where customers could be discussing something and company people could be on the other side of the wall and observing them, that is observation. या ये जैसा मैंने बताया, ये क्लासरूम को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, या शॉपर स्टॉप्स वेस्ट साइड में किसी एक कोने में रिसर्चर ने अपना चेयर लगा रखा है और वो कस्टमर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है. हाउ आर दे मूविंग, ब्राउजिंग, पिकिंग द जॉब, प्राइस टैग देख रहे हैं क्या, कलर, फैब्रिक, वो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है. एंड रिस्पोंडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मे नॉट नो एक्चुअली कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है. सो दैट इज ऑब्जर्वेशन वेयर inputs are getting recorded as per researcher's tool, but he is not or she is not participating, and respondent may or may not. The third common type is experiment. Experiment. कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे कॉम्प्लान नहीं पीने वाले बच्चों से 3 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ते हैं. Something like that. So let's say for example, I have 100 students from Bal Bharati in standard 11th, Bal Bharati school से. मैंने इनको 2 ग्रुप में बांटा, 50 स्टूडेंट्स एंड 50 स्टूडेंट्स, और ये सब मैंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया उनको. ये 50 स्टूडेंट को यूटी एसएटी प्रोग्राम में एनरोल किया और इनको नो एसएटी प्रोग्राम दिया, एंड दे आर मेड टू राइट एसएटी टेस्ट. एंड आई ऑब्जर्व कि जब इन्होंने एसएटी लिखा तो जिन बच्चों ने यूटी का एसएटी प्रोग्राम दिया उनका 200 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज ज्यादा आया कंपेयर टू जिनका कोई एसएटी ट्रेनिंग नहीं हुआ. दिस इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, वेयर दिस ग्रुप इज कॉल्ड control group. Control group is a group in an experiment where no intervention, no external intervention is applied. इन 50 बच्चों को यूटी का एसएटी प्रोग्राम या किसी का भी एसएटी प्रोग्राम ट्रेनिंग नहीं दिया गया, इनको कॉम्प्लान नहीं पिलाया गया, इन्होंने कोलगेट टूथपेस्ट नहीं किया. कंट्रोल ग्रुप. No external intervention was applied. This group is called experimental group. External stimulus was given. बाहर से एक स्टिमुलस दिया गया, इंटरवेंशन दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, कॉम्प्लान पिलाया गया, कोलगेट पेप्सोडेंट किया इन्होंने, और फिर हमने स्टडी किया कि क्या चेंज आए. सो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. बोलिए, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. So if you are very lucky, there could be a very simple question which could test your understanding of what kind of study was it. इतना सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में. राइट हो गाइस, आगे बढ़ सकते हैं. मैं भी थियरी कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे. इक्शा नायर, ये क्लियर है? Yes, sir. चिन्मय रानाडे, एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. चिन्मय, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. कैलिब? No, sir. ओके. ईशान, ऑल गुड? आगे बढ़ सकते हैं Yes, sir. कि 2 मिनट चाहिए तुमको? नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, ठीक है. So we go ahead guys
And we go to the next part with respect to SAT survey and all this. तो जैसा मेरी आदत है, एक छोटा सा केस बिल्ड करते हैं हम. ये थियरी का केस बिल्ड करूंगा मैं, और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे other forms of study, survey, or all those technical words. So let's say Navi Mumbai hypothetically कुछ ऐसा दिखता है map. Let's say something like this. ऐसा नहीं दिखता है, but let's say ऐसा दिखता है Navi Mumbai. So I am a researcher and I want to do a study on, let's say, doctors in Navi Mumbai जिनका minimum degree MBBS है. They could be MD, MS and so on, but minimum MBBS है, मुझे उन पे एक study करना है. So I contact Medical Council of India और Medical Council मुझे बोलता है, hypothetical है सारे number. Let's say there are 2 lakh registered doctors with minimum MBBS degree in Navi Mumbai area. So this value is called population. इसको बोलते हैं population size. अब मुझे कोई स्टडी करना है. मान लो मुझे ये पता करना है what is the, निधि नहीं ये सब समझ में आ रहा है? अभी तो बस मैंने बिल्ड करना चालू किया. Is it okay? Yeah, sir, I'm getting it. Okay, now let's say I want to study what is the first time average visit fees for doctors of Navi Mumbai. मुझे first time visit fees एक डॉक्टर का क्या है नवी मुंबई में with minimum डॉक्टर का qualification MBBS हो. I want to find this thing. One of the ways is I go to each of the 2 lakh doctors, talk to them, collect the data and then do number crunching. अब 2 लाख डॉक्टर को मिलने जाना है, उनसे समय लेना है. This will consume lot of my time, lot of my effort and also lot of money. I may have to employ people and pay them और ये सब करना और बहुत समय लग जाएगा. So what I decide is that let me not go to 2 lakh doctors. Let me go to 1% of the population, which is I will visit 2,000 doctors and I will do this random sampling. मैं ये नहीं करूंगा कि सिर्फ MBBS के पास चला जाऊं, सिर्फ हार्ट सर्जन चले जाऊं, सिर्फ ऑर्थोपेडिक चले जाऊं, सिर्फ गायनेक चले जाऊं. I do random sampling, so I have equal representation of the sample and I go to some 200 doctors because वरना cost, time and effort बहुत लगने वाला है. This is called as, sorry मैं blue से लिख रहा हूँ सारे parameters, so let me not change this ताकि बाद में ये पेज तुम लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा. This is called as sample of the population. So this is my sample size. This is sample size. Now what am I supposed to study? I am supposed to find out average fee for first visit. मुझे average fee निकालना है in Indian rupees for first visit. So this is called as the sample parameter that I am going to study. मुझे क्या पैरामीटर स्टडी करना है? एवरेज इनकम हो सकता है, एज हो सकता है, बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती हैं. इन दिस केस इट इज एवरेज फी. तो मेरे सैंपल का सैंपल पैरामीटर अंडर स्टडी और वेरिएबल अंडर स्टडी इज व्हाट इज द एवरेज फी फॉर फर्स्ट विजिट इन नवी मुंबई एरिया फॉर डॉक्टर्स विद मिनिमम क्वालिफिकेशन. यही है. तो पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, मैंने एक सैंपल लिया. सैंपल क्यों लिया? क्योंकि पॉपुलेशन पे ये सर्वे करना विल मेक नो सेंस. मैं सैंपल को स्टडी करूंगा और उसको जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा पॉपुलेशन पे. एंड दिस इज द पैरामीटर दैट आई एम गोइंग टू स्टडी. दिस इज कॉल्ड एज सैंपल पैरामीटर. नाउ लेट्स से गाइस, ये करने के बाद आई डू दिस स्टडी एंड आई कम अप विद अ डेटा व्हिच सेज द एवरेज फी for doctors in Navi Mumbai for first visit is 1500 rupees. Okay, तो ये सैंपल पैरामीटर का आपको ये जो वेरिएबल था इसका आपको एक वैल्यू मिल गया and you say okay, so this is the result I have got, I will publish it. But before you publish, you know that मैं अगर इसको जनरलाइज करने जाऊंगा I may incur some error क्योंकि मैंने सारे 2 लाख लोगों से बात नहीं की है. I've only spoken to
2,000 of them randomly, but randomly is a very important thing. I've done it randomly, but there can be some error. So while I am publishing to safeguard researchers' credibility, मैं आपको ये बोलता हूँ that average fees is this plus minus 200 रुपए. तो मैं अपनी रिसर्च में पब्लिश करता हूँ एवरेज फी फॉर फर्स्ट टाइम विजिट टू डॉक्टर्स इन नवी मुंबई इज 1,500 rupees plus minus 200 rupees. This thing is called as margin of error. तो सैंपल पैरामीटर जो आपने स्टडी किया जिसको आप जनरलाइज कर रहे हो पॉपुलेशन के लिए ताकि वो पॉपुलेशन पैरामीटर बन जाए, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए प्रिजर्व करने के लिए एज अ रिसर्चर यू आर सेइंग प्लस माइनस 200. तो दिस वैल्यू, इस तरह की कोई वैल्यू सर्वे में आएगी, हम इसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ एरर. So this means basically if there's a number line, let's say if there's a number line and if I have some other. So what I am saying is let's say tomorrow if Mohana Varshini says I will do this similar survey with similar sample size randomly, but of course it could be a different set of doctors, वो जरूरी नहीं है जो मेरे 2000 हैं वो 2000 उसके भी हों. She says let me repeat this survey. So if she is repeating this survey, there is a very high chance कि उसका जो मीन है, सैंपल मीन है, सैंपल पैरामीटर का मीन है, एवरेज फीस, वो मेरे मार्जिन ऑफ एरर के साथ इसके बीच में ही कहीं आए. मेरा मीन है 1500 with a margin error plus minus 200. So there's a very high chance when Mohana does this survey with a same sample size on same population, same sample size में से population निकाला, यही पैरामीटर उसने भी स्टडी किया, there is a very high chance that her mean falls between my or around my margin of error. तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्जिन ऑफ एरर नहीं, ये एक इंटरवल है. This interval guys, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं भाई? Blue. This interval guys is technically called in सर्वे की भाषा में confidence interval. So there's a very high chance when Mohana does the same kind of study in the same population by taking same sample size, her sample parameter should fall in my confidence interval. तो confidence interval क्या है? Sample parameter plus minus margin of error. ये जो interval आएगा, ये मनीष सराफ जो एक रिसर्चर है उसका confidence interval है. इस confidence interval में किसी दूसरे रिसर्चर का मीन आना चाहिए. Are you following this? Now. Yes, sir. Yes. अब ये हर बार हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है. So again, when I am publishing this, I will say, let's say I say 95%. Manish Saraf claims that 95% I am confident. Manish Saraf says 95% I am confident that if any other researcher does the same research on the same population with my population size, her mean would lie between my confidence interval. मैं फिर से repeat करता हूँ. Manish Saraf, the researcher, says that I am 95% confident if somebody does the similar research studying the similar sample parameter over the same population, taking the same sample size. मेरा hand freeze हो गया ना? Hold on. So let me repeat. So sorry. So Manish Saraf, the researcher, says that he is 95% confident that if anybody else does research on the same population, taking the same sample size, studying the same sample parameter,
his or her mean would fall between his, Manish Saraf's confidence interval. So this value is called as researcher's confidence level. Full stop. I am done. हो गया SAT का सिलेबस आज अभी फॉर्मली कंप्लीट. ये आना चाहिए आपको. क्या आना चाहिए आपको? आपको आना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ स्टडी और उनका डिफरेंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन इस पे आ सकता है. एंड देन यू मस्ट नो व्हाट इज पॉपुलेशन साइज, टोटल यूनिवर्स. मैंने मेरा यूनिवर्स कैसे डिसाइड किया है? नवी मुंबई. आप इंडिया करेंगे ये चेंज हो जाएगा. उसमें से एक सैंपल लेना है. क्या पैरामीटर स्टडी करना है वो सैंपल पैरामीटर हुआ. आपने जो एवरेज निकाला, मीन निकाला, जो भी आपने वैल्यू निकाली उस वेरिएबल की वैल्यू है. मार्जिन ऑफ एरर लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा. ये रिसर्चर का क्लेम है जहां पे वो बोल रहा है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि कोई और स्टडी करेगा तो उसका मीन मेरे इंटरवल के अंदर ही होगा. प्रोबेबल, प्लॉजिबल. ध्यान रखना ये सब स्टडी है. आपने देखा होगा जब कोवैक्सीन वैक्सीन आया था, कोवैक्सीन कोविड का, इट सेड माय एफिकेसी इज 96%, 69%, 74%. तो क्या कोई कॉन्फिडेंटली रिसर्चर 100% बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं. इन्फ्लेशन हो सकता है, चेंज इन पॉपुलेशन पैरामीटर हो सकता है मेरा यहाँ पे कन्वीनियंस आ गया हो. यार नवी मुंबई में आयरोली कौन जाएगा? लेट मी डू इट खारगर, पनवेल, नेरुल एक ही बात है. और ऐसा हो सकता है जो दूसरा रिसर्चर है वो बोलेगा यार पनवेल कौन जाएगा, वहां पे शायद पेइंग कैपेसिटी सानपाड़ा से कम है, लेट मी नॉट गो देयर. रिसर्चर बायस आ सकता है. सो इसीलिए 100% नहीं हो सकता. 90%, 95%, 93% कॉन्फिडेंस. नाउ क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चन यू मे हैव फॉर मी, पूछो. नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं और उससे इसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं. गाइस, नन? कैन वी गो टू प्रॉब्लम्स नाउ? एक मिनट, मुझे सबको देखने दो, अभी सब देख नहीं रहे मुझे. हाउ डू आई डू दैट? होल्ड ऑन. रिमूव स्पॉटलाइट. खारकर को स्पॉटलाइट करते हैं क्योंकि ये सब तो मुझे दिख रहे हैं. How many of you are writing December SAT? I know Caleb is not writing. Chinmay, you are writing December SAT? Yes. अच्छा, मैडम ने बताया नहीं मुझे. हाँ, ईशान लिख रहा है December SAT? Yes. Very good. ये अनिरुद्ध नहीं लिख रहा है तो C4 में है. अभ्युदय लिख रहा है, मोहना लिख रही है. ओके. एंड सहस चौहान. निधिनी नहीं है फॉर श्योर. इक्शा नायर, फाइनली यू आर राइटिंग December SAT? Sorry, sir. Yes, Iksha, sir, I'm Iksha, writing you- December SAT. और आप C2 बैच के हो ना इक्शा? What, sir? Are you from C2 batch? C2? Yes, sir. Okay, okay, ठीक है. So guys, remember that there is this mock test happening. All those who have taken October SAT C2 batch में, जो C3 batch का mock है, ये अलग series है. So you must write these 3 mocks also for extra practice. 23rd November, 27th November and 30th November को ये mocks हो रहे हैं, इसको लिखो. 24th November को I am available at Kharghar branch in case you want to do in-person doubt solving with me. In case you want to do Zoom doubt solving, मैं available रहूंगा. Me and Nandini and Uday sir is available on 25th November. And आप किसी भी मैथ्स के टॉपिक के लिए मेरे पास आ सकते हैं और उदय सर के पास जा सकते हैं. ऐसा नहीं है जो पढ़ा है वही पूछना जरूरी है. ऐसा नहीं है. मैंने कई बार SAT दिया है तो मुझे अब सब कुछ अच्छे से आने लग गया है, मुझे ऐसा लगता है. तो यू कैन टेस्ट. तो आप आ सकते हो अपने डाउट्स लेके. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू सम प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट वी हैव जस्ट डन इन केस यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. तो क्विकली क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूँ. दिस इज माय स्क्रीन. अभी जो स्क्रीन पे सवाल आएगा वही करते हैं. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड सहस, आई वुड वांट यू अनम्यूट एंड रीड दिस प्रॉब्लम लाउडली. साथ में करेंगे. A random sample of 35 four-door passenger vehicles had a mean gas mileage in miles per gallon of 25.9 g. The estimate had a margin of error of 2.6 at a 98% Miles per gallon confidence level. at 98% confidence level. Go ahead. Of the following, which is the most plausible value for the true mean
gas mileage of all four-door passenger vehicles? ट्रू मीन का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का क्या मीन होगा? अगर सैंपल का ये मीन है, गिवन मोस्ट प्लॉजिबल, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं सर्वे वाले, मोस्ट प्लॉजिबल, मोस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर ये 20, मैं हमेशा बोलूंगा इसमें तो ना भैया, द बेस्ट थिंग इज मेक अ नंबर लाइन। 25.9 ये मेरा मीन है, इसमें एक मार्जिन ऑफ एरर लगाओ। 2.6 लोअर एंड पे क्या हो जाएगा? बोलो ना। 23.3 और हायर एंड पे क्या हो जाएगा? 29.5. 28.5 ना। 29 किसने बोला? इज दिस करेक्ट? अभ्युदय ये करेक्ट है जो मैंने लिखा है? हाँ सर 28.5। ठीक है, अब इनमें से प्लॉजिबल मीन कौन सा है? 24 है क्या? हाँ इस रेंज में है। 29 है क्या? नहीं है। 32 है क्या? नहीं है। 35 है क्या? नहीं है। So one of the plausible value is for the true mean for the given study is option A. This is a real SAT problem. बोलो, समझ में आ गया? यस सर। Can we do one more? चलो एक और करते हैं। बस Yes. अगर ये समझ में आ गया तो you have won the battle. इसमें से कुछ भी आए you will always be able to answer. I give you 2 full minutes. Friendly advice, read all 4 options. Question from your book, question number 30. आप सबके पास बुक है 9.1, question number 30. Please करो। Hold on to your answers, we will discuss. Done guys, shall we? So let me stop share. ये टाइम कंज्यूमिंग होगा बट चलेगा। Caleb, what do you say? A, B, C, D? A. A. चिन्मय? A. ईशान? Sorry? A. Okay. चिन्मय के बगल में अनिरुद्ध? A. A. चारुल? A. अभ्युदय? A. मोहना? A. Okay, so Mohana, you be ready. Why A? तब तक निधिनी and okay, Sahas? A. A. Now let's look at, so Mohana, why A? Sir, the total population was taken from the poor eyesight. Option A defines it. It says that whoever took treatment X had a better eyesight, had improved eyesight. So, Okay, Mohana, I'll read it for you. Rather, you read it for me. Read the question. In order to determine if treatment X is successful in improving the eyesight, a research study was conducted. From a large population of people with poor eyesight, 300 participants were selected at random. Half of the participants were randomly assigned to receive treatment X, and the other half did not receive treatment X. The resulting data showed that the participant who received treatment X had significantly improved eyesight as compared to those who did not receive treatment X. Based on the design and results of the study, which of the following is the appropriate conclusion? Okay, what will you call this group which is not receiving treatment X? What is this group called? Control group. Control group. Very good. ठीक है. तो मुझे बताओ, what is problem with option B? What is problem with option B? Any one person? Sir, can you share the screen again? Yes, I can. Hold on. I'll do it again. Can you see it now? Can you see my screen, sirs? Okay. What is the problem with option B?
Go ahead, anyone. Caleb, go ahead and be loud. Sir, there's no other treatment mentioned in the question. Okay, very good. It says than all other. ये comparative study है ही नहीं. ये Pepsodent versus Colgate जैसा study नहीं है. There's nothing else mentioned. This is not a comparative study. ये answer नहीं हो सकता. What is problem with option C? Only for Sir, no sure. It was only given to the poor people with poor eyesight, not everyone. Yes, it says anyone who takes it. अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो भी ये ट्रीटमेंट लेगा तो उसके आईसाइट इंप्रूव हो जाएगी. अ वेरी बिग क्लेम एंड स्टडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ये तो जिसको पुअर आईसाइट है आपने वही सैंपल लिया था 300 लोगों का. इट्स नॉट एनीवन हु टेक्स इट. वेरी गुड. 10th में आओ. 10th क्या बोल रहा हूं मैं. डी पे आओ. प्रॉब्लम बोलो डी का. Does not mention substantial improvement. In eyesight. Substantial improvement in eyesight होगा, but किसका? People with problem. This is again a tall claim. This cannot be the answer. Treatment X is likely. मैंने बोला ना diplomatic होते हैं ये लोग. Likely to improve eyesight of people who have poor eyesight. ठीक है? लाइफ बॉय का ऐड देखा है, वो जर्म्स को 99.9% मारता है. जो बचता है वही कोरोना. You can say that, but that's how they save themselves. कि we never said 100%. जो बच गया उसने ही प्रॉब्लम की है आपके साथ. ऐसा ही होगा इसमें. चलो, we solve one more problem guys. एक और क्वेश्चन करते हैं before we end it off. बुक में होना चाहिए. हाँ, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. एक्सेलेंट प्रॉब्लम. खान एकेडमी लेवल 4 क्वेश्चन. रीड इट. आपकी बुक में है तो देखो. सैट चैलेंज क्वेश्चन 3. ये स्क्रीन पे भी है. मैं ऑप्शंस दिखाता हूं आपको. And Iksha, I would want you to read this problem by turning on your video, turning on your audio. Read it loudly for us. The graph shows the results of a controlled experiment designed by a scientist to determine the effect of magnetic field strength on the growth of sunflower plants. 500 young sunflower plants were randomly assigned to the control or experimental group. In the control group, the scientists grew 250 sunflower plants under normal local geomagnetic field conditions, 30 microteslas. In the experimental group, the scientists grew 250 sunflower plants identically except under a lower geomagnetic field, 20 microteslas. मत पढ़ो Write इसको. parenthesis आगे. Based on the results of this experiment, which conclusion is not valid? is not valid. और आपको यहाँ दिख रहा है कंट्रोल ग्रुप है जिसको कुछ नहीं किया गया, नॉर्मल कंडीशन में रखा गया. एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको लोअर जियोमैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया. और आप y एक्सिस पढ़ सकते हो. मीडियन सनफ्लावर हाइट in inches. Which of the conclusion is not valid? You cannot conclude from this study. ये 4 में से. ये वो ऑप्शंस हैं गाइस. Read it, read all 4 and decide one option for yourself. Sir, option A. Okay. C. Ishan, what do you say? Sir, option C. C. Very good. Ishan? C. Sahas Chauhan? C. C. और 1 मिनट रुको, खारगर को स्पॉटलाइट करते हैं. कैलिब? C. चिन्मय? C. ईशान ने बताई दिया. अनिरुद्ध पाटिल? सर कंफ्यूज. ए मैंने ठीक से पढ़ा नहीं अभी. हाँ, मैं वापस शो करता हूँ. अभ्युदय? C. चारुल? सर मैंने डी ऑप्शन अभी तक नहीं पढ़ा. And Mohana? Sir, you can read the D option. ठीक है. So here I go again.
And all those who have already given an answer, if you want to reconsider your answers, A और C में ही fight है, तो A वाले वापस पढ़ो, C वाले वापस पढ़ो, and C. सर ए वाले में वेट दिया है बट इन द क्वेश्चन मैडम मैंने आपसे पूछा, अभी डिस्कशन चालू कर दिया है क्या हमने? कोठारी जी, आपका वीडियो क्यों बंद है? जिनका वीडियो बंद है उनसे तो मैं बात ही नहीं कर सकता. क्या करोगी इतना बैंडविड्थ बचा के? अभी रुक जाओ, रुको निधिनी. I'll talk to you, but hold on. हाँ भाई, what do you say? Let it be a fish market. Announce. क्यों, कहाँ गया? सी कहाँ चला गया? हाँ, वो क्योंकि वो निधिनी ने अभी बोल दिया, उसमें वेट दिया है. Look at option A. Sunflower not valid. हाँ, sunflower plant grows under lower magnetic condition are more, way more. It's not talking about weight. हमको पता ही नहीं है डेटा के बारे में. तो आंसर होगा, Iksha, you were correct. A. Let's look at C. Sunflower plants grow under lower magnetic field condition were more likely to be taller than sunflower plant grown under normal. देखो जरा ग्राफ को. हाँ, ये तो है. They are more likely to be taller than control group normal magnetic field. चिन्मय, कैलेब, कैसे किया ये गड़बड़ आप लोगों ने? Sir, I forgot that not. हाँ, इवन ये वाले क्वेश्चंस ना ज्यादा एरर प्रोन वाले होते हैं, वेयर यू मे गो रॉन्ग. इट्स नॉट दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड बट अज्यूम कर लिया. तो ध्यान रखना है नॉट वाले क्वेश्चंस में. गुड थिंग विथ एसएटी इज, जब ये नॉट आएगा तो जिस तरह से अंडरलाइन है ना, वो लोग उसको अंडरलाइन करके देते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट goof up. चलो, we go ahead. I hope there are no doubts around this. There should be one more problem that I would want to solve with you guys. Yes, I give you full 45 seconds. Solve karo. That challenge problem 4 on your book. Which of the following conclusion is best? Sir, C. Right guys, C. कोई D तो नहीं बोल रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल को आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल रिसर्चर का क्लेम है. 79% वो सैंपल पैरामीटर है. मार्जिन ऑफ एरर लगाओगे तो 76 से 82 के बीच में आएगा. So option C है, between 76 and 82% arrived within 15 minutes of their scheduled time. A और B में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, the first word. Exactly नहीं यूज कर सकते हैं. ये टॉल क्लेम हो जाएगा किसी भी रिसर्च में. You cannot do that. Extreme statements, exactly, always, these are difficult things. ये वाले phrases आंसर नहीं हो सकते. चलो, one more. Challenge problem 5. 1 minute. And don't announce the answer till I ask you. Which of the following is most likely to be equal to percentage of all American adults who would say that airlines should allow in-flight calls? Chalo, shoot. B. Everybody is saying B. Sir, B. Chinmay Ranade, please explain how B. Sir, so it says that randomly selected, so 44%, 44.8% of the respondents said it with a margin of error about 2.5%. So the range will be 42.3 to 47.3.
42.3 to 47.3. Yes. okay. So there is only one option which lies between them. It's तो 43%. सारे अमेरिकन एडल्ट्स का प्लॉजिबल कितना परसेंटेज होगा अगर हम देखेंगे, so there is only one option which is 43% which lies in this range, so answer is this. क्योंकि यहाँ पे भी देख लो मोस्ट लाइकली वर्ड यूज हुआ है, ये सब इस रेंज के बाहर है तो आंसर नहीं हो सकते हैं, ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल था, लेवल था, तो एनीवे आंसर नहीं होगा, आंसर इज बी। आ गया गाइस समझ में? So pray that you get a problem from this area of mathematics so that you get it 100% right. That's all from my side. I think इससे ज़्यादा भी मेरे पास शेयर करने को कुछ नहीं है. We complete my pending task. All the best. Feel free to ask for more sessions on one-on-one basis to get your doubts solved in maths and English. मेरे साथ, उदय सर के साथ, अनुभव सर के साथ and Mrs. नंदनी, हम चारों अवेलेबल हैं. आप हमसे और सेशंस लीजिए, ठीक है? कोई डाउट आता है एसएटी को लेके मुझसे जरूर बात करना. सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव रिसेंटली रिटन डिजिटल एसएटी. आप में से कोई लिख के आया अभी डिजिटल एसएटी? डिजिटल एसएटी हुआ था कल ऑल ओवर इंडिया, कोई नहीं लिख के आया. तो C3 वाले और C2 वालों को तो चिंता नहीं है बिकॉज आपका दिसंबर एसएटी पेपर बेस्ड हो रहा है. C4 निधिनी, चारुल, कैलेब, अनिरुद्ध पाटिल, you guys, I will meet you separately. अब मैं आप लोगों से, अब आपका मैथ्स वापस से होगा, चैप्टर 1, 2, 3 वो सब होंगे, तो मैं आपसे जब मिलूंगा तो आपके डिजिटल एसएटी को लेके हम क्या तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्या चेंजेस हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू. ओके? एंड दिसंबर अटेम्प्ट गाइज, इन केस यू राइट योर सेकंड अटेम्प्ट मार्च में, मई में, तो आपसे हम फिर अलग से बात कर लेंगे. ओके? ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छे से करो, एंजॉय करो संडे को और खूब प्रैक्टिस करो 3 दिसंबर के लिए. Yes, sir. चलो, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you. बाय Thank you, sir. बाय.